ये एक ऐसा स्वाद है जो गुरु चरणों में बैठने वालों को ही मिल सकता है। जैसे मैं अभी जो भी बोल रही हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी ऐप में जाएगा, फेसबुक में भी जाएगा, यूट्यूब में भी जाएगा, बहुत लोग इसको घर में बैठ के सुनेंगे। पर ये मैं लिख के दे सकती हूँ, जो तुम इस समय यहाँ बैठ के अनुभव कर रहे हो वो टीवी स्क्रीन पर देख करके कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो आप इंतजार कर रहे थे अगले सेशन की, जो आप घर से दूर आके यहाँ बैठे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, वह आपकी तपस्या है, वह आपकी तपन है, वह आपकी तड़प है। आप तैयार हैं कुछ तकलीफ सह करके भी, कष्ट सह करके भी, दूर घर से जा करके भी, घर का कंफर्ट छोड़ करके भी, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी जगह में बैठ करके गुरु से श्रवण करने का, गुरु से मिलने की चाह रखने का, ये इंतजार करने का जो स्वाद होता है, वो फेसबुक पे एक अंगूठे के बटन को दबाया और फोन में स्क्रीन चालू हो गई और उसको आप सुनने लग गए, आप ये सब यात्रा को मिस कर जाओगे। See, I was in my master's place just few months ago. I went back there after a long time, and from whom I got my sannyas. So when I went there, so many things have changed. But my disciples were with me, and I was telling them, like I was pointing out that this is the spot where I would sit from morning, maybe 7, all the way to 3 or 4 in the evening. It's cold floor, no matting, no carpet. We would be told that you'll have to wait. So we would wait. So I would sit there, never going out to eat food, never going out even to bathroom, because I wouldn't drink anything or eat anything until I have darshan of my master. So I would just sit there at that one spot, 4 hours, 5 hours, 6 hours, and sometimes then the message would come, no, you will not be permitted to see him today. Okay. When can I? Okay, come tomorrow. What time? Come 2 o'clock. Fine, no complaints. I would go stay in some cheap inn. I'm cold whole night or hungry or whatever, doesn't matter. Couldn't sleep whole night because I am waiting to go there. I don't want to be late. I had no car, I had no money, very little money. I will take a public bus, travel another 2 hours to reach Shahbad, and then again wait for that right person to whom I can convey that I have come. And I need to see. And then they would say, okay, wait. So you are waiting again. And then finally you get the chance. So you walk up those stairs, take the left turn, and see the master is sitting on the cot, absorbed in his meditative state. And then you sit by his cot, and then you're looking at him, but he is somewhere else because he is meditating. No, again wait starts. When will he open his eyes? Because we cannot shout and say, oh, I have come. So you again wait, looking at his beautiful face, looking at his meditative eyes, waiting for him to open his eyes. And then he would open eyes, look at me, give me a smile, and then sit up and then talk to me. Sometimes half hour, sometime 20 minutes, sometime just 10 minutes. And his chief disciple would come and nudge me, get out now. Your time is done. You can't complain. You are so happy to have that little teeny weeny conversation. You do your pranam, and you come out dancing, beaming that you have met your master. Can anybody feel this
by just watching their guru's face in Facebook or YouTube or TV. No, they cannot. They cannot. अगर आज कोई मुझे कहे कि चेंज द स्पॉट, कि तुम टीवी में उनको देख लो या वीडियो में उनको देख लो और इतनी मुश्किल इंतजार मत करो जहाँ पता ही नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं फिर भी उस इंतजार को चुनूंगी। वो ठंडे पत्थर पर बैठ के इंतजार करने को चुनूंगी, क्योंकि जो उसका मजा है, जो उस इंतजार का मजा है, जो उस प्यार का मजा है। और हमारे गुरु के जो शिष्य थे उनके पास हम लोग बैठ के सीखते थे। मेरे गुरु से मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं सीखा, उनका तो दर्शन करके बस वैराग्य और प्रेम की एक अग्नि जलती थी, छोटा मोटा बस बातचीत होती थी। पर जिनके पास हम बैठते थे वो उनके शिष्य थे, हमारे लिए गुरु समान थे, उनसे सीखते थे। और बात चली है तो थोड़ी सी कथा सुना देती हूँ। कथा ये है, मैं उस समय पर 9th क्लास में थी और मैंने बहुत सुन रखा था कि एक बहुत मुश्किल ग्रंथ है वेदांत का, तो वो अगर किसी ने पढ़ लिया तो बस आनंद हो जाएगा और सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो मैंने एक दिन उनको प्रार्थना करी कि क्या आप मुझको वो ग्रंथ पढ़ाएंगे। तो मेरी शक्ल देख रहे हैं और कहते हैं अच्छा तू पढ़ेगी? हाँ पढ़ूंगी। तो उन्होंने दूसरों से पूछा किसी और को पढ़ना है, तो 4 लोग और आ गए। तो हम 5 लोगों के साथ ग्रंथ शुरू कराया गया। 1 हफ्ते में एक भाग गया क्योंकि मुश्किल था। दूसरे महीने में आता वो दूसरा भी भाग गया, फिर तीसरा भी भाग गया, फिर चौथा भी ड्रॉप आउट हो गया, बची सिर्फ मैं एक। पर मुझ अकेली के साथ वो घंटों बैठ करके सिखाते, समझाते, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते। और मेरे इतने प्रश्न होते थे कि उन प्रश्नों को सुन करके कभी कभी डांट भी पड़ती थी, तो सोचती बहुत ज्यादा है, कम सोचा करो। देखिए मैं सबको कहती हूँ सोचा करो। हाँ, तुम सोचते नहीं हो, तुम चिंतन नहीं करते हो। और मुझे डांट इसलिए पड़ती थी कि तुम चिंतन इतना क्यों करती हो, इतना मत करो, छोड़ दो, सिर्फ सुनो और समझो। हानि समझ लगी पर, वो कहते थे एक तो तेरी पर नहीं खत्म होती। But that is how you learn. You ask a question. When you wish to know who I am, when you wish to know what is this ignorance which has made us so stupid that we have forgotten our own true self, the pain and the anguish to seek, to know, when that hurts you so much, then you are going to think about it and then you are going to ask the questions. So in Vedanta there is a very famous example of snake and rope. That it was a semi-lit area, there was a piece of rope, but you thought that it is a snake. So why did that snake appear? Was that snake illusion in your mind or whether it was outside? So philosophically there are 6 different schools of thought which tell that why this snake was seen. So you have to understand all the 6 schools of philosophy, Sankhya, Bauddha, Jaina. You are understanding all these things, and for a 14-year-old girl, it was pretty tough. Mind you, now you might be 60 or 70. If someday I will talk about all that, you will be banging your head. Oh God, how difficult it is. But it was such a pleasure and such an adrenaline rush for me to sit and understand that. और अब कोई कहे हमने तो कभी शास्त्री कोई नहीं पढ़ा, तो बाबू तुमने कुछ फिर स्वाद भी नहीं लिया। तो गुरु के लिए कहा गया, गुरु कौन? जो शास्त्रों को भी जानता है और शास्त्र जिस सत्य की बात करते हैं उसने उस सत्य का अनुभव भी किया है। इसलिए ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्म निष्ठा,
दो चीज़ों के साथ कोई गुरु गुरु हो सकता है। तो शास्त्र और सत्य का ज्ञान दोनों जिसके पास होते हैं, अब ऐसे गुरु के को मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात, और ऐसे गुरु के पास बैठ कर के सुनना और बड़े सौभाग्य की बात, और सुने हुए पर साधना करना और बड़े सौभाग्य की बात। जीवन में जब ऐसी ये एक पैसेज जब किसी के शुरू हो जाए, जहाँ ऐसी ज्ञान की धारा बहने लग जाए, उसका जो रस है, उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, उस आनंद को कैसे वर्णन किया जाए। अब एक गुरु है जो बाहर है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, पर एक गुरु वो है जो मेरे भीतर। मेरे भीतर गुरु कौन सा है? So because the question is very vague and the person is asking that what is the relation of meditation with medulla oblongata and what is the connection of eyebrows central point with the medulla, I wish to know, and why it is important that we focus on these 2 points. See, these days half-baked information is available everywhere. And by just using some heavier words, some newness is being brought. Some newness is being brought. But because the question has come, hence I am going to talk about it. In your spine, there are some very sensitive points. Like I would say that there is a dormant energy lying at the root. Physically speaking, that root is where we would say it is the area in between the anus and perineum. That is the root chakra where the dormant energy or the kundalini is lying. And in the spinal cord, physically speaking, in the spinal cord, there are further points which are like junction box, or it is a wheel on which this energy is going to travel, and it is going to make those chakras function. And when these chakras begin to function, it opens up a whole different world of experiences. And mastery on your emotions and body too comes along with that, as per the chakra vigyan, should I say. So from Muladhara, the root chakra, then comes the second, the Swadhisthana chakra. From above that is the third chakra, which is, we can physically speak, it's behind the navel. It is behind the navel, not in the spinal cord, because if you will cut somebody's spinal cord to find where these chakras are, you will not find anything at all. Right? But physically speaking, the location is behind the navel, in the region of the spinal cord, but it is at a subtler level, or should I say, in the subtle body. Above the Manipura chakra is the Anahat chakra. Above the Anahat chakra, physically speaking, it is behind the heart. Then comes the Vishuddhi chakra in the throat region. And then comes the Agya chakra, that is the mid center of the eyebrow, the Agya chakra. And if we look from the spinal point of view, then that is the area where the medulla oblongata is. Right? Now this chakra, the Agya chakra, Agya means to order. Right? Agya means who can give order, who has authority to give order.
Now, who has authority to give order? The Guru has the authority to give order. Hence, this sixth chakra is called the Guru Chakra.